बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में ज़रा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करना बहुत ज़रूरी है और पिछले 2 दिन से अगर मैं कराची की सतह पर बात करूँ तो ये ख़बर सबसे ज़्यादा गर्म है और यही गर्म है क्योंकि अगर आपको खाना गर्म करना है तो उसके लिए गैस तो आपको अवेलेबल नहीं है। SSGC की जानिब से बताया गया कि कॉनिकल बैफल चार्जेस जो हैं वो अब आपके जो भी गैस के बिल्स हैं उसमें लग कर आएंगे और वो लग के आना शुरू हो चुके हैं। हमने तर्जुमान से भी SSGC की बात की तो उन्होंने कहा कि ये खबर हमने कहा था कि इस तरह से नहीं है। बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी NOC दी है, उनकी इजाज़त के बाद हमने ये चार्जेस जो हैं वो अप्लाई किए हैं। लेकिन जब ज़ाहिर अवाम तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो शहर में गैस नायाब क्या छोड़िए मिलती ही नहीं है। घरों में जैसे आम हम देखते थे कि चूल्हों में गैस आती है, अब वो भी नहीं आती, आप सिलेंडर्स पर शिफ्ट हो गए हैं। फिर ज़ाहिर है आपके बहुत सारे और दीगर फैक्ट्रीज़ वगैरह के जो काम हैं वो भी रुके हुए हैं। लेकिन असल में मैं बात करना चाहती ये हूँ कि सुई सदन गैस कंपनी ने ये जो ज़ाहिर इजाफी चार्ज लगाया है सर्विसेज का, ये क्यों लगाया है और ये कॉनिकल बैफल आखिर है क्या, और अगर है इसके चार्जेस इतने ज़्यादा क्यों? अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी इजाज़त दी थी तो कोई किसी किस्म की कोई जो प्राइस है उसके ऊपर बात हुई होगी कि एक आम आदमी जो कि आपको पहले ही पता है कि मईशत का तबाह हाल है। अभी अब मैं बात करूंगी जिस शख्सियत से, वो खुद सुई सदन गैस कंपनी में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और 1-2 साल नहीं 12 साल का तजुर्बा रखते हैं। इंजीनियर मुस्तफ़ा अब्दुल्ला, साबिक जनरल मैनेजर SSGC हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जनरल मैनेजर मैं रिटायर हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातें हमने बड़ी करनी है लेकिन कराची के सारफीन पर बताया जा रहा है कि 2,500 रुपए से ऊपर का ये जो है गीज़र की मद में वसूल किए जाने वाला चार्ज है। सर आप इंजीनियर हैं तो आपसे पहला सवाल तो मुझे ये बताएं कि हमने गीज़र लगा के गलती की है या ये कॉनिकल बैफल जो है ये कोई अजीब व गरीब चीज़ है जो हमें नहीं पता? नहीं, कॉनिकल बैफल कोई चीज़ नहीं, ये गीज़र का हिस्सा होता है और आप इस पर चार्ज जो लगा रहे हैं ये बहाना था, एक नया नाम टेक्निकल नाम देना था, लोगों को बेवकूफ़ बनाए। ये तो आपने गीज़र क्यों लगाया है, ठीक है? या तो आप कहते हैं गीज़र निकाल दो तो 90% लोग गीज़र निकाल देंगे, ठीक है? हम चूल्हों पे पानी गर्म कर लेंगे लोग। क्या इलेक्ट्रिक हीटिंग बेहतर रह जाएगी? इलेक्ट्रिक हीटिंग पे चले हर बाथरूम में इलेक्ट्रिक हीटर लगा देंगे तो इससे बजाय 10,000 रुपये आप सुई गैस को हर महीना दें, आप 25-50,000 रुपये इलेक्ट्रिक हीटर लगा देंगे अपने। जी, आप ये भी मुमकिन है। तो टाइम दे लोगों ना, लोग शिफ्ट हो जाए ताकि आपको गैस बच जाए। आप चाहते हो गैस अगर तो सर ये मेरे सुनने में आया कि ये KP और बाकी जगहों पर शायद ये पहले से ही ये बिल्स लिए जा रहे हैं कॉनिकल बैफल के, अब कराची वालों के ऊपर आए। मुझे जहाँ तक ख्याल है, मैं पिछले 2 महीने पहले इस्लामाबाद में था, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा केस है। बल्कि इन्होंने एक और चीज़ लगाई है, लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि 500 और 1,000 रुपये फिक्स चार्ज लगा दें हर बिल के ऊपर। तो इसमें जो कच्ची आबादी वाले हैं उनके 500 रुपये फिक्स मीटर रेंट आ गया। स्लैब्स कर दिया है उसको, स्लैब के अलावा है ये। अच्छा, हाँ, स्लैब तो ऑलरेडी कर दिए, उसके तहत तो आप वैसे ही ज़्यादा गैस का बिल पे कर रहे हैं ना। ठीक है, जितनी आप गैस कंज्यूम करोगे आप हायर रेट पे गैस का बिल पे कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मीटर रेंट लगा दिया 1,000 रुपये डिफेंस में तारिक रोड के कंज्यूमर्स के ऊपर ना। अच्छा। और बाकी जो कच्चे इलाके हैं उन पे 500 रुपये का मीटर फिक्स टैक्स है। जी हाँ, फिक्स चार्ज। तो पहले जिस तरह मेरे घर का बिल अगर 500 रुपये आता था तो वैसे ही 1,000 रुपये ऐड हो गया, 1,500 रुपये हो गया, टैक्सेस भी और लग गए। और अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता गीजर है तो फिर तो ये अब कह रहे हैं कि गीज़र के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो आप बोलें भी, लोगों को निकालने का चांस दो ना। हमने गीज़र नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, हमें क्यों टैक्स लगा रहे हो हमारे पर? आप भी ज़रूरी नहीं गीज़र इस्तेमाल करें, आप कहेंगे मैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग कर लूँगी मैं, ठीक है, तो वो उस पर चले जाएंगे, वो सस्ता पड़ेगा हमें। अच्छा, क्योंकि देखें मुस्तफ़ा साहब, आप इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं इसलिए मुझे आपसे समझने को ज़्यादा शायद आसानी होगी। ठीक है, चार्जेस लगा रहे हैं, सरचार्ज भी लग रहे हैं, स्लैब्स भी बनते जा रहे हैं, हमारे पास तो गैस ही नहीं है। देखिए इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है, जो आम, मैं अगर टाइमिंग्स की बात करूं, सुबह में अर्ली मॉर्निंग आपके पास गैस नहीं है, यानी अगर सुबह 6 बजे किसी को कहीं जाना है और उसको घर में कोई काम करना है, घरेलू सार्फिन के लिए सुबह 6 बजे गैस नहीं होती है। गैस आती है आपके पास 8 बजे, दोपहर 3 बजे तक वो चली जाती है, रात को 10 बजे वो फिर चली जाती है। ये हर इलाके का कहानी है। तो फिर क्या शॉर्टेज ऑफ गैस है हमारे पास या हमें डिफरेंट और जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके ऊपर जाना चाहिए? शॉर्टेज ऑफ गैस तो हो गई ना। अगर हमारे पास 4,000 MMCFD गैस बनती थी, प्रोड्यूस होती थी 4 साल पहले, तो आज वो 2,500 रह गई है ना। ठीक हो गया क्योंकि आपके कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं। नहीं, कंज्यूमर नहीं बढ़े, हमारे पास पीछे फील्ड से गैस। अच्छा, फील्ड, ओके, अच्छा। इसीलिए तभी वो LNG लाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, हाँ। तो LNG सारी बातें महंगी होती है, वो आम कंज्यूमर को नहीं दे सकते, वो डायरेक्ट पावर प्लांट्स को जानी चाहिए। पंजाब में 4 पावर प्लांट्स बने, उनके लिए 600 MMCD LNG आ रही है ऑलरेडी, ठीक हो गया, तो उधर चलेगी। बाकी जो नेचुरल गैस है वो हमें इतनी महंगी तो नहीं पड़ती ना जितनी ये लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना।
अगर आप उठा के इनके खर्चे देखें सुई सदर्न गैस कंपनी, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज के, तो पिछले 4 सालों में उन्होंने 4 गुना खर्चे बढ़ा दिए हैं अपने, ठीक है ना। मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी चलती, बॉडी बढ़ती जा रही है मैनेजमेंट की, ये तो मैं भी बोलूंगी आपसे। कोई भी कंपनी हो, कोई भी दायरा चलता है, पीपल पीपल एंड पीपल, ठीक है ना। आपके पास पीपल ही नहीं है, आप जाके देख लें, एमडी है, नॉन टेक्निकल एमडी है, ठीक है ना। दूसरे बाग है ये जो नए आए हैं जी, जो नॉन टेक्निकल है जी, अकाउंट्स के बंदे हैं, ठीक है ना। मजाक तो नहीं, कंपनी चलानी ना, आपको करोड़ों लोग, 5 करोड़ रुपए लोगों को आप गैस दे रहे हो सिंध के अंदर, ठीक है ना। एमडी साहब नॉन टेक्निकल, और डीएमडी साहब है, उनका लेवल देख लें, वो कल के दिन ट्रैक्टर कंपनी में काम करते थे, आज डीएमडी बन गए। एसजीएम लेवल पे आप आ जाइए, ठीक है ना। कोई ताल्लुक नहीं सुई सदर्न गैस कंपनी से, बस प्रमोशन होती गई, साइड में सिफारिश एंटर हो गए, और सारे 70% अगर मैनेजमेंट देखोगे आप, सारी नॉन टेक्निकल ऊपर आ गई, ठीक है ना। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, कोई भी इदारे को चलाने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, लोग ही नहीं है आपके पास, जो मर्जी में करो। जिसकी डायरेक्टर्स जो हैं, जो भी डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं सुई सदर्न की जानिब से, वो डायरेक्टर एमडी की जानिब से दिए जाते हैं, डायरेक्शन। हाँ, तो एमडी डायरेक्टली नेगोशिएट या बात या इजाजत प्राइम मिनिस्टर से लेते हैं? नहीं, फिर उसका क्या मैकेनिज्म है? कोई प्राइम मिनिस्टर या एनर्जी मिनिस्टर जो है उनके साथ? एनर्जी मिनिस्टर से हम लोग कंट्रोल होते हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, पावर डिवीजन, ठीक है, वहाँ से जो भी परमिशन आती है, प्राइम मिनिस्टर को ताल्लुक नहीं है इस बात से। अच्छा, लेकिन इस दफा क्योंकि मैंने ये सवाल जानबूझ के किया, कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉनिकल बैफल चार्जेस लगाने के लिए अथॉरिटी दी है, उन्होंने कहा ये आप चार्ज लगा दें, ये बात कही है तर्जुमान ने। आपसे अगर अथॉरिटी दी, मैं पूछूंगा, एक दिन में 3 सूट चेंज करते हैं वो, उनका एक सूट जो 40 लाख रुपए का सूट होता है, उनसे पूछे कहाँ से पैसे आते हैं कि आप दिन में, अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिन में 3 सूट चेंज किए, 3 टाई चेंज की, उनके एक सूट जो 40 लाख रुपए का सूट है, उसके लिए पैसे हैं, और गरीब आवाम को आप कह रहे हैं कि जी बैफल चार्ज इस वक्त ओरिजिनल प्राइस देखिए मुस्तफा साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका अपना तजुर्बा है, 2014 में आप रिटायर्ड हुए हैं एसएसजीसी से। मैं स्पेसिफिकली पूछूं, देखें अगर मैं पिछले 20 साल पहले का अहाता आपके सामने करूं ना, तो 100 रुपये बिल आता था, वो बढ़ के सिसक के 250 रुपये पर पहुंचा, फिर कर आके 300 पे पहुंचा, और फिर वो हरा पत्ता यानी 500 तक पहुंच गया, ठीक है। इस वक्त एक्चुअल जो गैस की प्राइस है वो क्या होनी चाहिए फॉर द कहते हैं जो आपके घरेलू सार्फिन है उनके लिए? देखिए, घरेलू सार्फिन को तो वैसे भी गैस सब्सिडाइज दे रहे हैं ना। हाँ, लेकिन वो तो अब तो नहीं रही ना, वो तो कह रहे हैं हमने सारी जिंदगी आपको सब्सिडाइज दिया था, अब तो हम आपसे पैसे लेंगे। अगर आप देखें तो ये बैफल चार्ज 2500 रुपये लगा दिए, गैस के चार्जेस अलहदा होंगे, उसके बाद टैक्सेस अलहदा होंगे, और जो है मीटर फिक्स चार्जेस आपके 500-1000 रुपये अलहदा हो गए, तो आपका बिल एवरेज अगर 4000-5000 रुपये आ जाएगा, हाँ, तो फिजिबल कोई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? चले मैं और आप तो अफोर्ड कर लेंगे 5000 रुपये। सर मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकती, मैंने आपको अभी बताया, प्रोग्राम ऑन एयर होने से पहले मैंने आपको बताया, पिछली पूरी सर्दी गैस नहीं थी, लेकिन गैस का बिल 5000 था। तो ये सुई सदन में नॉन टेक्निकल लोग हैं, इस वजह से हो रहा है ये सब कुछ। मोस्टली नॉन टेक्निकल लोग हैं जो टॉप मैनेजमेंट में आ गए हैं, उनको गैस कंपनी की एबीसी भी नहीं पता। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं या क्या इश्यूज हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, जरूर है कि जी गैस हमारे पास जो फील्ड से आती थी उसकी भी शॉर्टेज है, उसकी भी शॉर्टेज है, ठीक है ना। हाँ। उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। क्या कैसे मैनेज कर सकते, मतलब आप एक इतने बड़े शहर को जो मेगा सिटी कहलाता है, अब आपके घर में कोई रात को 10 बजे आए, आप उसको बगैर खाए खिलाए पिलाए छोड़ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, हम सिलेंडर पे चले जाएं, या एसएसजीसी के बिल्स हम दे रहे हैं, ये हम गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर गैस लोड शेडिंग करें इसी तरीके से, तो इन्होंने अपने लॉसेस कम किए ना, गैस की लोड शेडिंग करके इंटीरियर सिंध में चले आए, वहाँ तो और ज़्यादा लोड शेडिंग है। अच्छा, अब कराची में कच्ची आबादी में चले आए तो दिन में गैस नहीं होती है वहाँ, तो लोड शेडिंग तो कर रहे हैं ना ये। हाँ, कर रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि उसी तरह से अपने वो लॉसेस कवर कर रहे हैं, वरना हमारे पास जो लीकेजेस हैं, हाँ, गैस की इंटरनल सिस्टम में लीकेजेस है ना, पुरानी पाइपलाइन हो गई हैं, वो लीकेजेस हैं, तो उसमें जो है अब ये प्रेशर्स कम कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं, लीकेजेस कम होती है, ठीक है ना। तो वो अपने लॉसेस कम करने के लिए, अपनी नाकामियों को समझे कवर करने के लिए गैस बंद कर देते हैं वो। अगर अच्छी लाइनें हों, साफ़ सुथरी लाइनें हों, जिसमें सुराख ना हो, लीकेजेस ना हो, तो आपके पास ज़्यादा गैस होगी। इस वक्त भी सुई सदन के ले लें 10% लॉसेस होंगे, छुपा के भी जो 10% लॉसेस कागज़ पे शो कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह सुई नॉर्दर्न के मेरे ख्याल में 10-15% लॉसेस हैं। ये 10-15 लॉसेस आप दें, अरबों रुपये की गैस हो जाती है, ठीक है ना, जो लीकेज हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब देखें, ज़ाहिर है क्योंकि हम मासूम आवाम हैं और मैं आवाम का ही सवाल रखूंगी, अब अगर घर पे बिल आ जाएगा, उसमें ये कॉनिकल बैफल चार्जेस लगे हुए होंगे, तो बिल तो आपको पे करना है, आपके पास इसका क्या इसका सोल्यूशन है? हाउ वी कैन कि हम ना दें ये बिल,
या तो गीजर लगाना छोड़ दें या हटा दें गीजर घर से, क्या करें? इस तरह बैफल चार्जेस लगाने से पहले इनको लोगों को बताना चाहिए ना, हम लगा रहे हैं तो लोग गीजर निकाल दें, खुशी खुशी निकाल देंगे गीजर। कॉल आपके ये लोग जो देगची में का पानी गर्म कर लेंगे या इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक पे चले जाएंगे ना। तो ये ऑन कर देंगे, इसके पैसे लगा रहे हैं तो 6 महीने टाइम दे लोग। यानी आपके कहने के मुताबिक मुस्तफ़ा साहब ये नाजायज़ है? नाजायज़, जाहिर बात है नाजायज़ है, बिल्कुल। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिए, प्राइम मिनिस्टर होता कौन अप्रूवल देने वाला, ठीक है ना। इसके तो पूरा प्रोसेस तब ओगरा है ना जी, ओगरा ने भी दिया, उन्होंने कहा हमने ओगरा को सिफारिश किया था और उसने फिर ओगरा के कौन लोग आ गए, सुई सदन के जो रिटायर होते हैं, सुई नॉर्दर्न रिटायर होते हैं, वो जाके ओगरा में बैठ जाते हैं। ओगरा है क्या? ओगरा तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आवाम का भी ख्याल करेगी, जो सुई गैस कंपनी का ख्याल करेगी, ठीक है ना। इस वक्त जो ओगरा का सेटअप है वो सिर्फ गैस कंपनी को फेवर करती है कि लूटो जितना लूट सकते हो। अब स्वी नॉर्दर्न का अगर आप देखें, सिर्फ उनका सिक्योरिटी बिल जो है ना 1.5 अरब रुपया है। कितना सिक्योरिटी जो पे करते महीने का, व्हाट इज दिस, मतलब भाई 1.5 अरब रुपया तो बहुत बड़ी रकम होती है ना। ऐसे कितने गार्ड रखे, कितने 100 गार्ड रखे, आपने कौन से बंदूकें जंग लड़नी है, आप इसे सिक्योरिटी का बिल इतना हो गया है, ठीक है ना। अभी स्वी सदर्न गैस कंपनी ने 20 अरब रुपए की नई इन्वेस्टमेंट करके नई पाइपलाइन बिछाई, बजाय इसके कि लीकेज ढूंढते रिपेयर करते, उन्होंने कहा जान छुड़ाई, नई लाइन बिछा दी। 20 अरब रुपए का आप लोगों ने पे करना है ना, हमने पे करना है ना। वो इसी तरह तो ले रहे हैं, तभी तो इस तरह ले रहे हैं ना। 20 अरब रुपए जो बैंक से 16% 18% लोन लिया है, मैंने आपने पे करना है ना, गरीब आदमी ने पे करना है। तो ये इनएफिशिएंसीज, इनकॉम्पिटेंस जो है ना, ये जो करप्शन जो है ना, ये तमाम चीज़ें मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही हैं। सारी बात स्वी सदर्न गैस कंपनी पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे पाकिस्तान में लूटमार मच रही है तो उसी तरह स्वी सदर्न गैस में लूटमार मची भी है। अच्छा, आपके दौर में, चले अभी की मैं जो बात है, आपके दौर में किस तरह से काम किया, जो इस वक्त काम किया जा रहा है उसमें आपको क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप उसके डिफरेंसेस मुझे बताएं, उस वक्त के हालात में और आज के हालात में आप लोग कैसे सारे बिल्स वगैरह की कलेक्शंस होती थी, आप लोग शॉर्टेजेस और लीकेजेस के हवाले से क्या काम करते थे जो ये नहीं कर पा रहे? नंबर 1 तो मैंने बताया, एक बेसिक वजह है कि गैस जो हमको मिलती थी वो शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज है, ठीक है, वो शॉर्टेज आ गई, ठीक है, उसको मैनेज करना था इनको। कैसे करें मैनेज, अगर आपके पास ये इस तरह आपको कह रहे हैं कि 10 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, हाँ, वो लोड शेडिंग करके मैनेज करें ना वो। अच्छा, ये सही कर रहे हैं, चॉइस नहीं उनके पास, ठीक है ना। लेकिन ये कि जहाँ ड्रिलिंग होती है पहले खबर आती है फलानी इलाके में, सिंध के दूर दराज इलाके में गैस का जो है वो नहीं नजर आ गई है, गैस मिल गई है, थोड़ी गैस मिलती है। हाँ। हमें अगर 2500 MMCFD गैस कंज्यूम हो रही तो वो 10 मिल रही है वहाँ से, ठीक है, नई फील्ड से। अखबार में इतनी बड़ी खबर आ जाएगी, पता नहीं हुकूमत ने क्या कमाल कर दिया है। अभी से खबर आ गई कि ऑफशोर में गैस ऑयल मिल गई, पाकिस्तान चौथा अमीर मुल्क बन जाएगा दुनिया। सारा फ्रॉड है, कोई नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ गवर्नमेंट अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को होप दिलाने के लिए, उम्मीद दिलाने के लिए। हालांकि मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जो मौजूदा सिस्टम है जिस तरह कोलैप्स कर रहा है, स्विट्जरलैंड गैस कंपनी देख लेना आप, जो कोलैप्स कर रही है, इनसे पूछें भाई आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिखाओ हमें, ठीक है ना, ओगरा को दिखाओ, पब्लिक में लाके दिखाओ कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्यों बढ़ गई इतनी ज़्यादा, ठीक है ना। हमारे ज़माने में MD को 10 लाख तनख्वाह मिलती थी, तो मौजूदा MD को 60 लाख तनख्वाह मिलती है। इस वक्त जो गए हैं जी, अभी रिटायर हुए हैं मकान, उनको 60 लाख मिलती थी। 60 लाख MD की तनख्वाह होती है? हमारे ज़माने में 10-15 लाख मिलती थी MD को। तो ये खर्चे क्यों बढ़ाए गए आपने, ठीक है ना। या तो कंपनी आपने गारंटी की होती है। एक सेकंड, अच्छा MD का काम क्या होता है? 60 लाख तनख्वाह लेते हैं वो, तो उनका काम क्या होता है? आप तो वहीं पे थे ना जब आप काम कर रहे थे, तो आपने क्या देखा MD की क्या वर्किंग होती है? टीम होती है, मतलब MD का रोल तो जाहिर बात होता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं होता। वो टेक्निकल साउंड होना चाहिए। साउंड, लास्ट टाइम जो आए थे MD वो टेक्निकली क्वालिफाइड थे, लेकिन भारत 60 लाख रुपये तनख्वाह बड़ी रकम है ना। तो ये बाकी SGMs को आप उनकी क्वालिफिकेशन देखें उठा के SGMs की, ठीक है ना। कल के दिन ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, आज DMD बन गए। भाई आपका तो ताल्लुक ही नहीं, अगर पता भी नहीं। गैस पाइपलाइन तो देखें हर गली में गुजर रही है ना, तो वो 9th फ्लोर बैठे हुए हैं, आप गैस कंपनी कंट्रोल करें, आप उतर के देखो सही कि हर गली के अंदर गैस लाइन गुजर रही है, लीक कर रही, कोई पूछने वाला है। हमें क्या ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना चाहिए? क्या हमें जैसे अब हम गैस की बात कर लें तो मैंने देखा हर घर में अब सिलेंडर्स पर लोग चले गए हैं, काफ़ी हद तक लोगों ने। डिफेंस की अगर मैं बात करूं वहाँ तो खैर गैस है ही नहीं, वो बेचारे तो चल ही सिलेंडर्स पर रहे। तो क्या हमें इस तरफ चले जाना चाहिए? ऑल्टरनेटिवली तो हमको सिलेंडर पर जाना चाहिए, ठीक है ना, चला जाना चाहिए, खुद तैयारी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आगे आपको लगता है कि गैस और महंगी हो जाएगी, इसी तरह से चार्जेस अलग महंगी भी हो जाएगी और अनअवेलेबल भी रहेगी ना, इसलिए कि मजीद गैस शॉर्टेज हो रही पीछे फील्ड से। जो गैस ये पहले से प्रोजेक्शन थी कि आज 10 साल के बाद गैस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अभी स्टडी में था, ये आप लोगों की R&D में था कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ गैस होगा, पीछे से गैस कोई बड़ी फील्ड मिली नहीं है, ठीक है। हमें और जाना चाहिए LPG के ऊपर, ठीक है ना, LPG कर लें। लेकिन सबसे बेस्ट ये पूरे न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिकल कुकिंग है जी, और गैस तो नहीं। सर आपकी इलेक्ट्रिक के चार्जेस आपने देखे?
आपके घर आता है बिजली का बिल? देखिए ना, बात ये वो एक हम कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, आपने तो हमें मारना ही मारना है ना। नहीं ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, उन्होंने पता नहीं क्या तहिया किया रखा। मैं इस्लामाबाद में आप चले जाओ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रहते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, उनके चपरासी। वैसे एक बात है, मैंने आज तक किसी SSGC के MD का बहुत कम ही इंटरव्यू देखा है। वो मैं जानना चाहूंगी कि बाकी उनकी वर्किंग है इस लेवल की कि वो शहर की हैयत, इसके हालात को जानते भी हैं या नहीं? नहीं, वो 9th फ्लोर पर एयर कंडीशन बैठे हुए, 20 डिग्री पे टेम्परेचर चल रहा है, निकले ना बाहर, निकले देखें सड़कों पे कहाँ। इंजीनियर मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब, मेरे पास वक्त कम रह गया, बल्कि ख़त्म ही हो गया है। आप आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खरी और सच्ची बातें कह दी हैं। मेरा ख्याल है कि लोगों को समझ आ गया होगा। चार्जेस जो हैं वो एक जबरी टैक्स आपसे वसूल नाजायज़ हैं, और ये ज़बरदस्ती के जिसे कहते हैं ये इम्पोज कर रहे हैं अपने लॉसेस कवर करने के लिए, अपनी इनएफिशिएंसीज कवर करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है नतीजा इसका। क्या प्राइम मिनिस्टर इस चीज को वापस लेते हैं? सुई सदन गैस कंपनी घुटने टेकती है या एक मरतबा फिर मासूम अवाम पिसती है? आज के लिए बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल की तरह ग़िज़ाई किल्लत की भी बात हम सुनते हैं, लेकिन आज एक मुनफरिद बात आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमेशा देखते हैं कि प्रोग्राम में हम मुनफरिद मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम एक और तरीके से भी मुनफरिद इसलिए कि जो मेरे आज के गेस्ट हैं ही इज़ कहना चाहिए कि द फॉरेनर, और उनसे आज ज़ाहिर अंग्रेज़ी में हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन आपके लिए मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि दुनिया भर में इस वक्त जहां हम बहुत सारे चैलेंजेस की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज आजकल आप सुन रहे हैं कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है, यानी हर कोई इस पर बात कर रहा है, लेकिन शायद इस वक्त तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं। इनफैक्ट वी रियली डोंट केयर अबाउट इट कि ये फूड इनसिक्योरिटी है भी क्या, और इसके लिए क्या हमें तशवीश का इजहार करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से दुनिया भर में काम भी कर रही हैं, और न सिर्फ ये कि उसके लिए आगाही फैला रही हैं, लेकिन आप जिस खित्ते में, जिस शहर में, जिस मुल्क में, जिस जगह रहते हैं, अगर वहाँ का जैसे पाकिस्तान के लिए हम बचपन से सुनते आए हैं कि 70% आबादी जो है वो देहात से जुड़ी है और उनका जो ज़रिया मुआश है वो ज़राअत है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो ज़रई शोबा है ये भी किसी हद तक डिक्लाइन का शिकार है। तो क्या पाकिस्तान, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत का सामना मुस्तकबिल में नहीं करना पड़ेगा, तो फिर भी क्या हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है या नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान हैं मेरे आज के, जेम्स रॉबर्ट, हेड ऑफ सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। थैंक यू वेरी मच सर to come on my studio, and thank you. We get really enlightened with your chat. Firstly, my audience needs to know how you people are doing these kind of the information for food insecurity. Thank you very much for having me. First and foremost, I want to mention that Pakistan is food secure. Okay. We grow enough food that can feed everybody. The problem we have is food distribution, from where we have surplus production, and issues of utilization, that is nutrition. So most of the production that we are having is of staples, that is the cereals, the staple cereals, rice and wheat. Okay, these two items are in surplus? They are, we produce enough to Okay. feed everybody Okay. in Pakistan. Okay. However, access is a problem, especially to some of the rural communities Okay. where the surplus is not enough. The production is not enough. Such like? But the most Sir, important... all Sindh areas? No. I think most of Sindhi has sufficient food. Okay. But the biggest problem we're having in Sindh is the issue of malnutrition. Okay. Where over 40% of the children are stunted. And you know, with stuntedness, there is a very big problem in the future, because stuntedness affects an individual's IQ. I know.
So it is important we quickly address the issue of malnutrition. We have enough food, but are we preparing it properly? Are we having the balanced diet? Are we having the right number of meals a day to make sure that a child under 5 is able to, have all the nutrients that are required for growth? Okay. So this is the main problem. What are the agriculture problem of Pakistan? And the small farmer, do you think that the small farmer is suffering? Yes. Much as we are producing surplus or sufficient food, there is a major problem of climate change, which is worsening by the day. And the effects of climate change, like floods, flash floods, prolonged dry spells, prolonged heat waves, are affecting production. In the near future, if we do not address climate change, effects of climate change, then our production is going to decrease significantly, and then we shall have issues of food insecurity. So the immediate problems that we need to address in agriculture is addressing the effects of climate change. And for us as Food and Agriculture Organization, we work with the government of Pakistan and also the provincial governments to make sure that we quickly introduce climate resilient agricultural practices. And we are working with the extension departments to make sure that the farmers are able to adapt their practices to the dynamics of the changing environment. So what do you think, James, how we transform our agriculture strategies and as per the climate change aspect? Yeah, this is a three-dimensional issue. Okay. One, we need to address, first of all, the policies so that we are able to make sure that our policies integrate elements that facilitate addressing of climate change. Secondly, we need to empower the communities to be able to make the rational decisions amidst the challenges they are facing. And the third is to make sure we build the requisite human resources in the extension departments. And on this point, we are working with various universities to make sure that we build capacity of not only the students in the right aspects of climate change, but also we are building capacity of the existing extension workers to be able to respond in a very systematic manner to the changing effects of climate change. It's no longer business as usual. We need to make sure that we are smart to be able to beat the challenges that are ahead. Do you think, James, that the new technology in agriculture department is also very, important, and we have to transform our agriculture land and our farmers on technology? We need to appreciate the type of farmer we are talking about. Okay. We are talking about smallholder farmers. I know. These are the major engines. Can we train them? They are trainable. Okay. They are very trainable. We just need to make sure that we have appropriate technology for farmers who are of low income to make sure that the technologies that we are trying to promote, the farmers can adopt them. Okay. Secondly, we also need to work with the large-scale farmers who can afford technology, artificial intelligence, to make sure that they can also cushion the smaller farmers. Indeed. So we have to have a dual trend whereby we support the existing large farmers, but also ensuring that the smallholder farmers are given the requisite capacities so that they're able to produce enough for their own consumption as well. You're also seeing, the government policy towards the farmers, or maybe the small farmer, which you are said that. Which you are satisfied with the government policies towards these small farmers, or either they have to be more, vigilant about that? I think the government has been very proactive, looking into the different policies. The government of Sindh last year
passed a new policy, water policy. And if you look into this policy, it is really trying to address how we can rationally use the decreasing volumes of water that are available for farming. Yes. So I want to say that I think there is a very strong proactiveness on the government side to look into all the policies to make them to be climate smart proof. And as we are speaking right now, we also are trying to integrate anticipatory action into the contingency planning, which is a very, very important aspect because it is cheaper to anticipate a problem and mitigate it than waiting to be reactive. Okay, James, as you know about the Pakistan is in a short of water, and you were talking about that as well. But as I speak that, we have the sufficient land, we have trained farmers, we have a good policy, but we are not using the new technology or maybe the new kind of things which we can grow more and we can, have more sufficient and surplus crops. Do you think that the water shortage is the main cause after, some days or maybe the years? I think we need to look at climate change from a multidimensional angle. Not only water is a problem, but also I think our colleagues in research are doing a lot of work to bring in place climate or drought tolerant varieties. Okay. So there is a lot of work going on. The only problem is you don't get the results immediately. So it's a process. It may take 2-3 years for a new variety to be adopted by farmers, but also it may take a bit of time for a whole community to appreciate how to do integrated watershed management. So there is effort, and I think I'm very optimistic, especially if we empower farmers, we should be able to at least manage to cope with the changes in climate change. So do you think that we have also be very, rush on these kind of a thing, the food importance and the food nutrition policies for the child? Okay, I think the issue of nutrition is something that is a responsibility of all of us. Okay. We all have a responsibility to have the right messaging to the last mile. That farmer who is in a remote setting, we need to make sure that they are helped to appreciate the importance of nutrition. They are also need to be helped to appreciate the effects of malnutrition because they have the milk. Sindh province is a dairy bank. We have plenty of milk products. Poultry industry is very well developed. So having a child eat an egg a day and also having a child access a glass or two of milk is possible in Sindh. But have we educated our farmers to be able to eat what they grow and not sell everything to the city? That is the campaign we need to work on. And today, being the World Food Day, this was the theme, whereby the address or the focus has been, how do we take the right message on proper nutrition to the last mile in Sindh province? Okay, last question. Which kind of, what do you think about, which kind of farming is morely good for the small farmers and the other people who are coming in this agriculture, the occupation? Okay. Because we have two problems at hand. We have the issue of climate change, and then we also have the issue of malnutrition. Right. The answer to this is to diversify our production. Not only to grow one crop, but to diversify into many possible crops that can contribute to
a balanced diet. Have Okay. the cereal, have the legume. Also make sure you have animal protein. Let us promote more fish farming, Yeah. because fish farming is possible in Sin. Yeah. And the fish in Sin I is think- very tasty. Yes, yes. So it is important that All we right. promote good feeding practices. Okay. Any suggestion on this day, which is, you know, the food incredible? You Yes. did a great job. But as we talk about the World Food Program, so what do you think about that for the in capacity of suggestion for Pakistan? Not Yes. only the Pakistan, especially in Sindh. Okay. For the World Food Day, this year round, the strategy has been totally different. We have decided to go back to the youth, because the youth, the future of the food systems is in their hands. Yes. And we are saying each of these youth, each of the students in the universities is coming from a home where a neighbor or a sister could be malnourished. We want them through social media to send simple messages Messages. encouraging nutrition Right. and behavior change to make sure that we are able to have a better meal a day. Well, thank you very much, James Robert, that you come and join us. Thank you very much. Thank you for having me.